I think last time Asan kuch say we have had 2 points. Mainly interactions, plant water interactions में असा last time पढ़ियो से expression and classification of water stress. Okay. Expression and classification. जैमें असा theology classification and B classification पढ़ियो से water stress. Okay, on the basis of this, second point was the influence of okay, second point was the Water stress on plants. influence of water stress on plants. So this water stress last time असां discuss कयो से त इहो stress जेको influence आहे उहो chain levels ताईं थी सघे थो organs ठीक आहे tissue levels and then the organ level, tissue level, and cell level, and also the molecular level. ठीक है molecular level जेका आहे उहा अञा कुछ डाउन हूंदी आहे वो अच्छा हिकिड़ी ॿी शइ आहे इहा शइ ज़हन में रखियो त महिरबानी करे चैट में पंहिंजो नंबर जेको आहे उहो सेंड करे छॾिजो ताकी जो आहे सो अटेंडेंस लॻी वञे छो त इहे रिकॉर्डिंग कंदो आहियां मां पोइ जेका बि तव्हांखे रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हुजे त पोइ मूंखे ॿुधाइजो मां उन लेक्चर जी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करे छॾींदुसि ठीकु आहे उन में जेको साउंड वीडियो इहो हर शइ मौजूदु हूंदी तव्हांखे आसानी थींदी उन सां रिवाइज करण में ठीकु आहे so influence of water stress on plants can be seen at 4 levels: organ level, tissue level, cell level, molecular level. Okay, plants mostly work better when they are fully turgid. Last time I think यही shares and discuss case. Okay. Fully turgid means the water content is present in vacuole, and vacuole is full expanded in its position. Okay. And whenever there is a loss of water, okay, relationship wherever there is a loss of water from cell or tissue or because when the water is lost directly it loses from the cell from the tissue first. Okay, tissue majorly you lose thing. For example, if we are taking mesophyll tissues of leaves ठीक है उनमें तव्हांखे ख़बर आहे त लीफ जी एनाटॉमी जेको डार्सी वेंट्रल लीफ हूंदो आहे उनजी एनाटॉमी में ही हूंदो आहे त जेको अपर पोर्शन हूंदो आहे उहो पेलिसेड चौराईंदो आहे पेलिसेड पैरेन्काइमा ऐं लोअर जेको हूंदो आहे उहो स्पंजी पैरेन्काइमा त स्पंजी पैरेन्काइमा जे विच में एयर स्पेसिस हूंदा आहिनि ठीकु ठाक ठीक है उन्हनि एयर स्पेसिस ते ई वरी स्टोमेटा जेके आहिनि उहे कनेक्टेड हूंदा आहिनि सो अहिड़े क़िस्म सां उन्हनि मां जेके मीज़ोफिल सेल्स आहिनि उन्हनि मां वाटर जेको आहे उहो रिलीज़ थींदो आहे उन्हनि एयर स्पेसिस मां वरी स्टोमेटा में अची करे उहो पाणी जेको आहे उहो ॿाहिरि निकिरंदो आहे लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन वी कॉल इट ट्रांसपायरेशन ठीक है न ट्रांसपायरेशन जे ज़रिए हाणे मोस्टली तक़रीबन सभिनी क़िस्मनि जे प्लांट्स में इंक्लूडिंग मीज़ोफाइट्स ठीक है ट्रांसपायरेशन we know that transpiration is a necessary evil. Why it is called necessary evil? उन्हें मकसद है तो पानी हुजे न हुजे रूट में प्लांट में पर ट्रांसपायर if stomates are open जॾहिं भी स्टोमेट यानी दरी खुलंदी त हवा ज़रूर ईंदी अंदर ऐं पानी ज़रूर ॿाहिरि वेंदो ॿाहिरि ठीक है तो स्टोमेटा उहे दरीअ वारो कमु कंदा आहिनि so fully turgid when there is a loss of water of in transpiration what happens mostly the situation that is going to occur over here, the turgidity of this cell is going to be reduced. ठीक है एक fully turgidity आहे उहा reduce थींदी माना हेठ थींदी suppose जेकरे असां चऊं त fully turgid जेको सेल आहे उन fully turgid सेल जो जेको water potential आहे उहो ज़ीरो आहे छो त असां पहिरियों पढ़ियोसीं त जॾहिं प्योर वाटर मौजूद हूंदो आहे कंहिं बि सेल साइटोप्लाज़म में या कंहिं बि सॉल्यूशन जे अंदर त उते उन में छा थींदो आहे इफ इट इज फुली टर्जिड देन इट्स वाटर पोटेंशियल इज ठीक है सपोज जेकॾहिं असां चऊं त उन जो वाटर पोटेंशियल जेको आहे उहो ज़ीरो आहे हाणे जॾहिं उन मां फुली टर्जिड माना more than 90% या 95% वाटर उन जे सेल साइटोप्लाज़म में मौजूद आहे okay then what happens
जॾहिं लॉस ऑफ वाटर थिए थो थ्रू ट्रांसपायरेशन, व्हाट हैपेंस, डेफिनेटली ही वाटर पोटेंशियल जेको आहे उहो लोअर थिए थो। लोअर माना ज़ीरो खां हेठि, जेकॾहिं ज़ीरो खां हेठि वेंदो त ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, डेफिनेटली असांजो जेको वाटर पोटेंशियल आहे उहो नेगेटिव्स में वेंदो। ठीकु आहे न, नेगेटिव वैल्यू में जेको आहे उहो ज़ाहिर थींदो आहे। ऐं असां लास्ट टाइम जेको सियाओ जी क्लासिफिकेशन पढ़ीसीं उन में -0.1 खां असां -0.5 पढ़ियासीं। ठीकु आहे, -0.5 मेगा पास्कल्स वग़ैरह वग़ैरह। ठीकु आहे, अहिड़े तरीक़े सां, सॉरी, -0.5 एंड इवन 1 माइनस जेको बि माना वैल्यू ईंदो अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन में उहो असांजो हेठि ई वैल्यू वेंदो जेको आहे, पर उहो हमेशह नेगेटिव में हूंदो। हाणे इहो नेगेटिव वारो वैल्यू पॉज़िटिव वरी तॾहिं थींदो जॾहिं, हाणे इन कंडीशन खे छा चवंदा आहियूं असां, प्लांट फिजियोलॉजी जे टर्मिनोलॉजी में इनखे चइबो आहे प्लास्मोलाइसिस। whenever there is a loss of water from turgid cell, turgid cell में जॾहिं पाणीअ जो रिमूवल थिए थो त प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस उहा कंडीशन हूंदी आहे जॾहिं कंप्लीट वाटर या मैक्सिमम वाटर कंटेंट जेको आहे उहो लॉस आउट थी वञे। ओके, when water is going to be lost under particular stress condition, ठीक है, so cell or tissues, they are coming under the stressful condition. Why they are coming under the stressful condition? Because in fact happens one thing over there. Okay, one thing happens, that is, one thing happens, that is the molecules which are dissolved in the cell cytoplasm, जेके cell cytoplasm में molecules जेके dissolved form में मौजूद हूंदा आहिनि उहे diluted form, छो त पाणी घणो मौजूद हूंदो आहे त diluted form में मौजूद हूंदो आहे। जॾहिं पाणी निकिरी वेंदो आहे त ऑटोमेटिकली उहे कंसंट्रेट थी वेंदा आहिनि, जॾहिं कंसंट्रेट थी वेंदा आहिनि त उन्हनि में रिएक्शन थींदो आहे ऐं हिकिड़ो मॉलिक्यूल कन्वर्ट थी करे कंहिं ॿिए मॉलिक्यूल में अची वेंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां टॉक्सिक सब्सटेंसेस जी डेवलपमेंट जेका आहे उहा ज़्यादा थींदी आहे। ठीकु आहे, इहो हिकिड़ो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट हूंदो आहे। ॿियो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट हिन जो इहो हूंदो आहे त ऑटोमेटिकली इफ देयर इज अ वाटर लॉस एंड वाटर कंसंट्रेशन इज लोअर, ऑटोमेटिकली मोर और लेस जेके ऑर्गेनेल्स जेके वाटर ते डिपेंडेंट हूंदियूं आहिनि उहे फंक्शन न कंदियूं आहिनि। मिसाल स्टोमेटा जेके स्टोमेटा त ख़ैर सेल्स आहिनि, मिसाल तौर जेकी माइटोकॉन्ड्रिया आहे हुन में जेका फोटो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन थींदी आहे, इट रिक्वायर्स वाटर। ठीक है, यानी एटीपी सिंथेसिस जेका है वो वाटर रिक्वायरमेंट। अड़े तरीके से क्लोरोप्लास्ट जेको आहे असांजो प्लांट जो उन में फोटोसिंथेसिस थींदी आहे, दैट रिक्वायर्स वाटर। हाणे जेकॾहिं वाटर जी शॉर्टेज आहे त ऑटोमेटिकली वाटर इन ॿिन्ही ऑर्गेनेल्स खे कोन मिलंदो। टी जेको आहे उहो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम ऐं गाल्जी एपरेटस आहे। ठीकु आहे, उन्हनि में वाटर कहिड़ो, छाकाणि त उहे ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स आहिनि जिनमें मॉलिक्यूल्स जेके आहिनि उहे ट्रांसपोर्ट थींदा आहिनि, त उहे वाटर खां सवाइ त कोन थी सघंदा। ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कोन थींदो, जेतिरो वो लिक्विड स्टेट में लिक्विड फॉर्म में हूंदो ऑटोमेटिकली वो ओतिरो। त अहिड़े क़िस्म जा इहे सभु ऑर्गेनेल्स जेके आहिनि दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड थ्रू दिस मैकेनिज्म। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर जे करे ये सब शयूं जेके आहिनि उहे मैकेनिज्म जे ज़रिए जेको आहे सो ओके। हिकिड़ी सिंपल क़िस्म जी एक्सप्रेशन जेका आहे उहा असां उनखे सम्झण जी कोशिशि था कयूं हिते। त सिंपल क़िस्म जी एक्सप्रेशन आहे जंहिंमें हिकिड़ो ग्राफ आहे। ठीक है, उन ग्राफ के असां समझण जी कोशिश था कयूं त हाउ दिस ग्राफ इज, हाउ प्लांट्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड डिफरेंट, खास तौर पे मॉलिक्यूलर एंड फिजियोलॉजिकल टर्म्स में। ठीक है, सो एट दिस लेवल सपोज दिस इज अ जीरो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, हिन जगह पे सपोज वी आर कॉलिंग इट एट दिस पॉइंट दिस इज -1, sorry, 1.0. Okay, at this point this is -2.0। ठीक है, हायर स्ट्रेस असां अॻु में पढ़ी चुका आहियूं त सीवियर स्ट्रेस जेको आहे उहो -1.5 ताईं जेको आहे सो जॾहिं वाटर पोटेंशियल हली वेंदो आहे त सीवियर स्ट्रेस कंडीशन में अची वेंदो आहे। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जेके आहिनि, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जेके डिफरेंट टाइप जा आहिनि उन्हनि में फॉर एग्जांपल सब खां पहिरीं शइ जेका आहे लॉस ऑफ टर्गर। ठीक है, लॉस ऑफ टर्गर फर्स्ट थिंग, ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। देन
we have the cell expansion, because directly or indirectly cell expansion is dependent on turgidity. ठीक है? There is a reduction, cell wall synthesis. ठीक है? Cell wall synthesis, then protein synthesis. Okay, protein synthesis, then protochlorophyll synthesis. Synthesis. Okay. Protochlorophyll synthesis. My synthesis in a jo heta to likha. Okay. Protochlorophyll synthesis. Then we have got uh, nitrate reductase enzyme. Okay. Nitrate reductase enzyme, abscisic acid synthesis. ठीक है? Abscisic acid synthesis, stomatal closure, stomatal closure. ठीक है? Carbon dioxide assimilation, CO2 assimilation. Assimilation means fixation. Okay. Okay. Then there is a rate of respiration. Okay. Then there is xylem cavities. Okay. Of accumulation of organic solutes. Solutes. Then we have flowing function. Sorry, flowing function, disruption. ठीक है? उन खां पोइ जेका ॿी शइ आहे, that is the inorganic nutrient supply. Inorganic, ठीक है? Nutrient supply, and also the wilting. So from the loss of turgor to leaf wilting, anytime we have got different physiological functions or phenomena that are occurring at the organ level as well as at the tissue level as well as at the cell level. ठीक है? मुख्तलिफ किस्म जा functions जेके हम proposed हुए इते describe थी हुए. Now I am going to draw the levels of कहिड़ी level ते जेको आहे so कहिड़ो जेको function आहे वो कहिड़ी level ते affect थिए थो. The जेको loss of turgor आहे, if I am going to make the arrows, oh sorry, bio सब खां अॻु में तमाम हिते हिकिड़ी शइ develop कया. I'm going to make one thing clear, that is if this is a negative sign it means this is a reduction actually. ठीक है? Cell wall synthesis में भी reduction, negative sign जेकर आया था, this is reduction. Okay. And protein synthesis, protochlorophyll synthesis, also the nitrate reductase synthesis, abscisic acid synthesis increases, remember. ठीक है? यह शे जेका है वो इते increase थींदी आहे. So it is going to be positive. Okay, stomatal closure negative because increases. Stomatal closure जेको आहे वो increase थींदो, decrease न थींदो. जॾहिं त एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस जेका है उहा बि इंक्रीज थींदी, CO2 असिमुलेशन डिक्रीज थींदी, रेस्पिरेशन रेट जेको आहे उहो डिक्रीज थींदो, ज़ाइलम कैविटेशन इंक्रीज थींदी.
कैविटेशन जो मतलब ज़ालनि थियूं जेकी कैविटीज़ आहिनि उहे वधीक ओपन थींदियूं, ठीकु आहे, त उन में कैविटेशन जो मैकेनिज़्म जेको आहे उहो वधीक वधंदो। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स उहे वधंदा। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स पर्टिकुलरली शुगर्स एंड प्रोलीन्स जीअं ओस्मो रेगुलेशन में असां ओस्मो प्रोटेक्टेंट मॉलिक्यूल्स चयोसीं। अच्छा, जेको फ्लोएम फंक्शन डिसेबिलिटी आहे उहा बि इनहांस थींदी, त माना छाकाणि त उहो जेको आहे एंड आल्सो न्यूट्रिएंट सप्लाई जेके आहिनि दैट विल बी नेगेटिव थींदो ऐं विल्टिंग जेका आहे उहा इंक्रीज थींदी, मीन्स इट इज़ अ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट हिन तरीक़े सां। ठीकु आहे, त असां वटि कुझु अहिड़ा फंक्शन्स आहिनि जेके रिड्यूस था थियनि, जंहिं ते नेगेटिव साइन असां ॾिनी आहे इन रेड में, उन में फंक्शन्स जेके आहिनि इहे फंक्शन्स जेके आहिनि दे आर गोइंग टू रिड्यूस ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, ऐं केतिरी लेवल वाटर जी केतिरी वाटर स्ट्रेस जी केतिरी लेवल ते केतिरी उन्हनि जे अंदरि रिडक्शन थिए थी, उन जे बारे में असां हाणे वरी जेको आहे सो लीफ लॉस ऑफ टर्गर इज स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम ज़ीरो। ठीकु आहे, रीज़न कहिड़ो आहे उहो मां तव्हांखे रीज़न ॿुधायो, त छाकाणि त इन सिचुएशन में लॉस ऑफ टर्गर is going to be happen up to this means 0 negative 0.1 खां स्टार्ट थी वेंदो आहे तक़रीबन, ठीकु आहे, लॉस ऑफ टर्गर। त ज़ीरो जेको वाटर पोटेंशियल यानी फुली टर्जिड सेल जेकॾहिं मौजूदु आहे त उहो फुली टर्जिड सेल मां जीअं ई ट्रांसपायरेशन थी करे थोरो पाणी ॿाहिरि निकिरंदो त टर्जिडिटी रिड्यूस थियणु शुरू थी वेंदी। सो इट स्टार्ट्स मोस्टली फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो खां थोरो जेकॾहिं वाटर लॉस थियो त ऑटोमेटिकली उहा टर्जिडिटी जेका आहे सेल एक्सपेंशन आल्सो, छाकाणि त सेल एक्सपेंशन जेका आहे उहा डायरेक्टली टर्जिडिटी ते डिपेंडेंट हूंदो आहे, त अहिड़े तरीक़े सां उहो बि इन ई तरीक़े सां इन ई जॻह ते रिडक्शन उनजी जेका आहे उहा स्टार्ट थी वेंदी आहे। ठीकु आहे, नाउ सेल वॉल सिंथेसिस जेका आहे, सेल वॉल सिंथेसिस जी रिडक्शन जेका आहे -1, इफ वी आर showing here the negative minus 0.1, okay, I'm going to show 0, oh sorry, 0.1, ठीक है, हिते I'm sorry, okay, यो हुन में लिखणो पवंदो, खैर 0.1 मां I'm going to tell you, ठीक आहे, असां तव्हांखे मां ॿुधायां थो त इहा शइ जेका आहे 0.1 जे फॉर्मेट में हिते मौजूदु हूंदी। 0.1 लेवल खां पोइ जेको आहे उहो असांजी जेका सेल वॉल सिंथेसिस आहे उहो हिन पॉइंट ते इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस। सेल वॉल जी सिंथेसिस जेका आहे उहा हिन पॉइंट ते जेका आहे उहा रिडक्शन उन में ईंदी। अहिड़े तरीक़े सां प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो स्टार्ट्स टू रिड्यूस फ्रॉम दिस लेवल। प्रोटोक्लोरोफिल सेल सिंथेसिस that starts from even more or less higher positions, ठीक है, यानी वाटर पोटेंशियल 0 पॉइंट माइनस 0.1 खां जेकॾहिं अञा बि रिड्यूस थींदो 0 पॉइंट माइनस 0.2 ते ईंदो त उन जॻह तां जेको आहे प्रोटोक्लोरोफिल सिंथेसिस जेका आहे उनजी रिडक्शन जेका आहे उहा स्टार्ट थींदी। ठीक है, and nitrate reductase definitely, because nitrate reductase is also dependent on chlorophyll activity या nitrogen activity जेका आहे प्रोटीनियस टाइप जा सबस्टेंस, छो त ही हिकिड़ो अहिड़ो एंजाइम आहे जेको नाइट्रोजन कंटेनिंग एंजाइम्स जेके मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे टोड़ींदो आहे ऐं उन्हनि खे रिड्यूस कंदो आहे, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। अच्छा, एब्सिसिक एसिड जी जेका सिंथेसिस आहे उहा ऑलमोस्ट जेका आहे एब्सिसिक एसिड जी इन ई पोजीशन तां इंक्रीज थींदी आहे। ठीक है, जॾहिं वाटर स्ट्रेस जेको आहे उहो माइनस -2 ताईं 0.2 ताईं पहुचंदो आहे त उन खां पोइ इन जी लेवल जेका आहे उहा इनहांस थींदी आहे। ठीक आहे, अहिड़े तरीक़े सां स्टोमेटल क्लोजर आहे दैट इज आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पोजीशन, यानी माइनस नेगेटिव 0.2. Also the carbon dioxide assimilation. Why carbon dioxide assimilation? Because we know that carbon dioxide assimilation is dependent directly or indirectly on the stomatal closure। ठीक है, उन ते डिपेंड करे थी, त कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा जेकॾहिं क्लोज थी वेंदा त ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड जेका आहे उहा अंदर जेका आहे घटी ईंदी। ठीक है, सो इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम -3, 0.3, -0.3, and it goes up to this level। ठीक है, so its starting point
is a broader range actually. Okay, for starting शुरुआत इतना थी दिया पर remember this is happening in the mesophyte plant, not in a drought tolerant plant. जेके xerophytes हूंदा आहिनि उन्हनि में ये शे mechanism जी उन जी असां ॻाल्हि नथा कयूं, असां हिकिड़े mesophyte plant जी ॻाल्हि था कयूं ऐं जंहिं mesophyte plant खे कंपेयर कयो वियो आहे well watered plants सां. ठीकु आहे, वेल वाटर्ड माना जेके 100% वाटर ॾिनो वियो आहे ऐं ॿिए के प्लांट खे जेको आहे सो हुन में अच्छा xylem cavities are going to start xylem elements the accumulation that is going to be start from this one -1 cavitation in xylem यानी उन जा जेके सोराख cavities आहिनि उहे सोराख cavities में convert थी वेंदा यानी xylem जेको वो सुकड़जण शुरू थी वेंदो आहे. ठीक है, accumulation of inorganic solutes, sorry, organic solutes starts from this one. ठीक है, and then organic solutes disruption of flowing function it starts from 1.5 almost this position -1.5. okay, phloem dysfunction as well as inorganic supply जो को आहे inorganic supply and the leaf wilting as well. ठीक है, ये लीफ विल्टिंग ये टई जेके मैकेनिज्म्स आहिनि उहे -1.5 जॾहिं वाटर पोटेंशियल पहुचंदो आहे सेल जो या टिश्यू जो ये टई फंक्शंस जेके आहिनि उन जॻह खां जेके आहिनि से उहे स्टार्ट थींदा आहिनि. So we can see there are different responses of plant जा जेके responses आहिनि towards different stress levels. जीअं stress level enhance थिए थी तीअं जेको आहे सो कुछ responses अहिड़ा आहिनि प्लांट जा जेके माइल्ड स्ट्रेस ते स्टार्ट थी था वञनि. माइल्ड वाटर स्ट्रेस जेके असां इनिशियल वाटर स्ट्रेस था चऊं -1 ताईं या उन खां 0.1 ताईं. ठीकु आहे, उन ताईं या -0.5 ताईं जेको नेगेटिव रेस्पॉन्स इहो वाटर पोटेंशियल आहे उन ताईं बि माना अहिड़े क़िस्म जा जेके प्रोसेसिस आहिनि जंहिंमें लॉस ऑफ टर्गर आहे सेल एक्सपेंशन आहे they are going to start reduction उन में स्टार्ट थी वञे. ठीक है, टर्गर भी लॉस थी वियो, टर्जिडिटी रिड्यूस थी वई और सेल एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली छो त प्लाज्मोलाइस जीअं टर्जिडिटी रिड्यूस थींदी त प्लाज्मोलाइसिस थियण शुरू थींदी ऐं सेल जेको आहे उहो सुकड़जण शुरू थी वेंदो. ठीक है, अहिड़े तरीक़े सां सेल वॉल सिंथेसिस आहे, प्रोटीन सिंथेसिस आहे, प्रोटोक्लोरोफिल ये भी माना इंतहाई थोड़े स्ट्रेस कंडीशंस में भी यानी थोड़ो भी वाटर लॉस थियो त ऑलमोस्ट ये जेके शयूं जेके और उहे ई सबब आहे त जॾहिं असां 2 या 3 ॾींहं पाणी कंहिं फसल खे या कंहिं क्रॉप खे न ॾींदा आहियूं या 8 ॾींहं कॾहिं कॾहिं थी वेंदा आहिनि त पोइ जेके सेंसिटिव प्लांट्स हूंदा आहिनि मोस्टली दे रिक्वायर every day or 2 days water. ठीक है, पर सॉइल में जेके कंडीशंस हूंदियूं आहिनि उहे कंडीशंस ईअं हूंदियूं आहिनि त प्लांट जी रूट जेका आहे उहो प्रोलिफरेट थींदी आहे. प्रोलिफरेट जो मतलब त उहा सॉइल जी रूट जेको प्लांट जी रूट जेका आहे उहो मुख़्तलिफ़ डायरेक्शंस में या डेप्थ में जीअं डेप्थ में अंदरि वेंदी त उनखे उते मॉइस्चर जेको आहे उहो मिली वेंदो आहे. सो सॉइल हाणे इहो डिपेंड थो करे सॉइल ते त कहिड़ी सॉइल मॉइस्चर खे पंहिंजे अंदरि केतिरो विद हेल्ड करे रखी सघे थी, पंहिंजे अंदरि पचाए रखी सघे थी. त जेके cheeky soil हुंदी आहे mostly we call that the clay soils, they are going to accumulate more water. ठीक है, मॉइस्चर खे उहो पंहिंजे अंदरि ज़्यादा देर ताईं एक्यूमुलेट करे सघंदियूं आहिनि. इन करे प्लांट खे पोइ पाणी जेको आहे उहो ज़्यादा टाइम ताईं ड्यूरेशन ताईं जेको आहे उहो अवेलेबल हूंदो आहे. प्रोटोक्लोरोफिल छा आहे, मीन्स कचो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्टार्टिंग शुरुआत जेका थींदी आहे क्लोरोफिल जी उहा उन में अॻु में प्रोटोक्लोरोफिल जेको आहे उहो डेवलप थींदो आहे. अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, क्लास पे वठा अचां थो. जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे. So abscisic acid synthesis, nitrate reductase that are bit tolerant type जेके आहिनि उहे कुझु ज़्यादा स्ट्रेस जॾहिं स्टार्ट थींदो ऐं लीफ विल्टिंग जेका मां असां लास्ट टाइम बि पढ़ियोसीं त -1.5 ते जॾहिं तव्हांजो MPa ते मेगा पास्कल्स ते जॾहिं तव्हांजो माना वाटर स्ट्रेस जेको आहे उहो पहुचंदो तॾहिं ही जेके आख़िरी फ्लूएंट डिस्फंक्शन जो छा मतिलबु थियो
it means phloem is not going to work properly. माना पानी जे करे घटिजी वेंदो, फ्लोएम जो फंक्शन छा है, माना सॉल्यूट जो शुगर्स आहिनि उन्हनि खे ट्रांसपोर्ट कंदो आहे न फ्लोएम, ठीकु आहे न, फूड कंडक्टिंग टिश्यू आहे, त हाणे वाटर जो जॾहिं लॉस थी वेंदो त ऑटोमेटिकली उन में जेको फूड मॉलिक्यूल आहे, फूड मॉलिक्यूल, उहो जेसिताईं वाटर में डिज़ोल्व न हूंदो त उहो कंसंट्रेटेड फॉर्म में अची वेंदो, यानी सेमी सॉलिड या सॉलिडिफाई क़िस्म जे, त उहो सॉलिडिफाई जेके फ्लोएम जूं वेसल्स आहिनि, फ्लोएम जूं जेके ट्यूब्स आहिनि, उन्हनि में ऑटोमेटिकली उहो अची करे ब्लॉक थी वेंदो त पोइ फ्लोएम जो फंक्शन जेको आहे उहो डिसेबल थी वेंदो, उन में डिसेबिलिटी हिकिड़े क़िस्म जी प्रोड्यूस थी वेंदी, ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सप्लाई जेको आहे सॉइल मां, छाकाणि त सॉइल में पाणी जेको आहे उहो लॉस थी वियो, मौजूदु कोन्हे, त उन मां इनऑर्गेनिक सप्लाई बि उहा रिडक्शन थी वेंदी एट -1.5 MPa जे स्ट्रेस ते उहा स्टार्ट थी वेंदी, एंड देन अल्टीमेटली प्लांट विल विल्ट। हाणे इहो जेको विल्टिंग वारो मैकेनिज्म आहे उहो कहिड़ो आहे, इलास्टिक स्ट्रेस, असां लास्ट टाइम पढ़ी चुका आहियूं असां, दैट विल बी अ प्लांट इज गोइंग टू बी अंडर द इलास्टिक स्ट्रेस, ठीकु आहे। पर जेकॾहिं इन कंडीशन में जॾहिं विल्टिंग थिए थी ऐं उनखे वाटर जी सप्लाई अची थी वञे किथां बि, रेन जे थ्रू, इरिगेशन जे थ्रू, या कहिड़े बि तरीक़े सां प्लांट खे उहा सप्लाई जेका आहे उहा रेस्टोर थी वञे, त ऑटोमेटिकली प्लास्टिक इलास्टिक स्ट्रेस जेको आहे उहो रिवर्स थी वेंदो, रिवर्सिबल कंडीशन में अची वेंदो ऐं रिवर्स थी वेंदो। पर इफ देयर इज नो सप्लाई ऑफ वाटर अंटिल मोर पीरियड, टाइम पीरियड ताईं जेकॾहिं सप्लाई वाटर जी न थींदी त ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, the elastic stress will be converted into the plastic stress, ऐं पोइ डिफॉर्मेशन जेका आहे उहा अञा वधीक एनहांस थींदी, ऐं डिफॉर्मेशन एनहांस थियण जे नतीजे में प्लांट विल डाई ऑफ, उन में बर्निंग थींदी ऐं उहो डाई ऑफ थियण शुरू थी वेंदी, ठीकु आहे। त टाइम हैज़ रनिंग आउट, if you have any kind of questions or queries, अॼु जे लाइ मुंहिंजो ख़्याल आहे एतिरो काफ़ी आहे, ठीकु आहे। सर सर जेको वेल्टिंग थींदी आहे सिर्फ़ लीफ में थींदी आहे? न, उहे मोस्टली उहे सब टिश्यूज़, उहे टोटल टिश्यूज़ जिन में टर्जिडिटी मौजूदु हूंदी आहे, ठीकु आहे न, उन में विल्टिंग थींदी आहे, जंहिंमें असांजूं मुखड़ियूं थींदियूं आहिनि, बर्ड्स, उहे बि हूंदियूं आहिनि, ऐं जेको नरम स्टेम जो नरम हिसो हूंदो आहे न, माना जेका चोटी वारो स्टेम वारो हिसो हूंदो आहे, उन में बि विल्टिंग थींदी आहे, छो त उते जेका सेल वॉल हूंदी आहे उहा प्राइमरी सेल वॉल हूंदी आहे, माना सॉफ्ट जेके टिश्यूज़ हूंदा आहिनि न उन्हनि सभिनी में विल्टिंग थींदी आहे, ठीकु आहे। पर घणे भाङे लॉस जेको आहे उहो वाटर जो जेको आहे, घणे भाङे लॉस जेको आहे उहो थींदो आहे थ्रू लीफ, त विल्टिंग जेका आहे उहा स्टार्ट लीफ खां थींदी आहे। जेकॾहिं हेठां खां सप्लाई आहे, प्लांट में पाणी अचे थो पियो ऐं मथां खां ट्रांसपायरेशन आहे, ॿिन्ही क़िस्मनि जी कंडीशन में विल्टिंग कोन थींदी, इंतहाई घणी हीट हुजे, टेम्परेचर हाई हुजे, त पोइ उन कंडीशन में विल्टिंग जेका आहे उहा थी सघे थी, छो त हुन में एवापोरेशन ऐं ट्रांसपायरेशन रेट ॿई वधी वेंदा, ठीकु आहे। पर अदरवाइज़ जेकॾहिं हेठां खां तव्हांजी वाटर जी सप्लाई जेका आहे उहा प्लांट खे मौजूदु आहे, अवेलेबल वाटर मौजूदु आहे, त पोइ विल्टिंग थींदी कोन। पर जेकॾहिं कंडीशन अहिड़ी अची थी वञे जो सप्लाई बि कट ऑफ थी वञे, यानी सॉइल में बि पाणी कोन्हे को, ऐं प्लस एनवायरमेंट बि इलाही हॉट आहे या गरम आहे, त पोइ विल्टिंग जेका आहे लीफ खां अॻिते हली करे पोइ जेके सॉफ्ट टिश्यूज़ हूंदा आहिनि, यानी सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट बर्ड्स, पोइ फ्लोरल बर्ड्स हुजनि या लीफ बर्ड्स हुजनि, कहिड़ियूं बि हुजनि, उहे वेजिटेटिव बर्ड्स हुजनि, उहे सभु जो सभु विल्ट थियण, यानी सॉफ्ट टिश्यूज़ जेके आहिनि उहे विल्ट थियण शुरू थी। सो लीफ में सिर्फ़ विल्टिंग न थींदी आहे, सॉफ्ट टिश्यूज़ सभिनी में पासो विल्टिंग थी सघे। थैंक यू सर। ठीकु आहे, त अॼु जे लाइ मुंहिंजो ख़्याल आहे काफ़ी आहे। इंशाल्लाह असल में मुझे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म पई थे, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस मोर। सर ये रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में मोकिले छॾियोसि। हलो कोशिश कयूं।